So far we have discussed only one control strategy. I think I told you there are various control strategies, but our entire discussion will be focused on only one control strategy, that is feedback control. Feedback. And in feedback too, only negative feedback control strategy, right? Everywhere we discussed only that strategy. What was the special thing about feedback control strategy? That it is a kind of compensatory control, right? It means in feedback control, first deviation from set point is going to occur, and later action, corrective action will be taken by the controller, right? तो सबसे पहले नुकसान होगा और नुकसान के बाद उसकी भरपाई होगी. And if your controller settings are proper, then the controller action will be sufficient to return back to the original steady state, and everything will be fine after that. Okay. So this is the essence of feedback control, that it is a kind of compensatory control strategy. Compensation मतलब आप समझते हैं ना, compensatory. Compensate करना means किसी नुकसान की भरपाई करना. Compensate करना means you have done something. Now you are doing some. You are taking action so that whatever your doings were, आप उसको correct करने के लिए कुछ और action ले रहे हैं. So that is called compensatory strategy. The same thing happens in feedback control. Now in advanced control strategies, there are various other control strategies, right? For gate point of view, we will discuss only two out of them. One is cascade control strategy and the other one is feed forward control strategy. But before going to that, in the previous lecture, I was discussing about the valve control action. I will take one more example to clear out one confusion. I told you that how to find the action of a controller. We also discussed that valves are direct acting or reverse acting. So I told you that air to close valve is always taken as direct acting. There can be a situation when even air to close valve can be taken as reverse acting, depending upon the various other things associated with the valve. But for our case, for our discussion, it is sufficient to consider that air to close valve will be considered as direct acting valve and air to open as reverse acting. If you know the nature of valve, you can always check the nature of controller by checking what is happening to the measured variable and then what is happening to the controller output. If the nature is same, then the controller is direct acting controller. ऐसे ही था, है ना? There is most of the students, they make a concept that, sir, we have seen everywhere that when the control valve is direct, means air to close, then most of the time the controller attached to the control valve is reverse, or the opposite. If the control valve is reverse acting valve, then the controller is direct acting valve. I think I took two examples, one for the liquid level control system and one for the temperature control in the exothermic reaction. In those two examples, if you verify this statement that if control valve is direct, controller will be reverse. If control valve is reverse, controller will be direct. If you verify this statement in those two examples, you will find that yes, this is correct. But there is no, there can be a situation when this statement won't be true. So that is why I always say कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, आप check कर लो ना. I told you the process. I told you the method how to check what is the controller action. Let me take one example. And after taking that example, I will start the advanced control strategy. Suppose this is a heat exchanger, a shell and tube heat exchanger, right? In this heat exchanger, from here you have cold fluid in, whose temperature is T in, okay? And here we have to heat this cold fluid, right? So hot fluid coming out, hot fluid leaving. So our purpose in this heat exchanger is to heat this cold fluid and then it will leave from here, then it will be used. Now suppose we have a temperature, not here, this is the hot fluid leaving, right? So it will be used for some purpose. Suppose here we install a measuring element. There is a temperature transmitter here. This temperature transmitter takes the reading of this hot fluid and sends it to the temperature controller. मैंने जो भी loops बनाया, आप देखो basic loop बनाने आपको आने चाहिए, whether it is a heat exchanger.
भाई प्रोसेस बदल जाएगा, हीट एक्सचेंजर की जगह डिस्टिलेशन कॉलम आ जाएगा, बट बेसिक लूप बनाने का तरीका इन अ फीडबैक कंट्रोल, दिस इज अगेन फीडबैक कंट्रोल, इन फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेटजी बेसिक लूप बनाने का तरीका एक ही है ना. सो दिस गोज टू द कंट्रोलर. फाइन. कंट्रोलर कंपेयर्स this is your T out, you can say. So to the controller we have a set point किसका दूंगा मैं, T out SS, right? Now what controller is going to do, there is one more stream, which is the stream which is used for, suppose you can say that there is a, for heating I'm using steam, there is a steam here, steam in, there is this valve, and this, with the help of this steam actually I'm heating this, right? Steam out और condensate out जो भी हो सकता है, doesn't matter, steam out कर लीजिए या चलो condensate, है ना. This is a simple process समझ में आ गया. Now the temperature controller is going to manipulate this steam flow rate here, right? Temperature controller is going to manipulate the steam flow rate to, right? This is the situation समझ आ गई. Suppose this valve is off. I told you ना that for deciding the nature of controller, you must know the nature of valve, right? Of course this is steam. I told you that even if they do not mention, then in some cases I can use the fail safe criteria. बहुत अच्छे से समझाया था what was fail safe. कुछ cases में suppose उन्होंने बताया नहीं that what kind of valve, what is the nature of valve here. So you can use the fail safe criteria, and I told you that what is the meaning of fail safe criteria. If this is this steam is used for heating, you know that if the controller fails, you don't want too much steam to pass through the exchanger, because in that case you don't have any control, and in that case this temperature can exceed. और देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत होती है, थोड़ा घट जाए तो उतनी दिक्कत नहीं होती. कहीं सुना कि टेम्परेचर इतना घट गया कि ब्लास्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता. So these are the logical explanations, these are the logical things. So obviously I told you, I think that if the stream is carrying steam, then most of the time it is air to open, means fail close, means when the system fails, when the controller fails, the valve should be completely closed so that यहाँ से steam ज्यादा ना जाए और ये इसका टेम्परेचर कम हो. इन दैट केस आपका सेट पॉइंट तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी. ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ वाल्व इट शुड बी, फेल, क्लोज और एयर टू ओपन वाल्व. सो इट कैन बी प्रोवाइडेड आल्सो दैट दिस वाल्व इज एयर टू ओपन, or otherwise according to fail-safe criteria also it seems that the valve should be air to open. अब आप बताओ कि अगर valve air to open है तो valve कैसा है, reverse acting or direct acting? Of course the valve is बताया हुआ मैंने, आपको याद रखना है, the valve is reverse acting. If it is air to open valve, the valve is reverse acting. Again I am telling you that in GATE exam there are few questions और उनके solutions हर जगह गलत दिए हुए हैं. आप जो भी ऑप्शंस है वहां पे उसको क्लास में आपको मैंने जो बताया उससे मैच करो, जो ऑप्शन मैच कर रहा है दैट इज द राइट आंसर, एंड लीव द क्वेश्चन. डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन unnecessary discussion. Sir, the following book has said this, the following website has said this, the following teacher has said this. उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना. आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आई ऑलवेज फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट, स्टैंडर्ड चीजों के हिसाब से बता रहा हूँ. ओके, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि वैसे ही लोग इस पर पढ़ाने पे ज्यादा समय नहीं देते, तो इसको जो सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, नोबडी नोज कि उसके पीछे कितना कॉन्सेप्ट लगा के, कितना सॉल्यूशन के पीछे कितना टाइम दिया गया, नोबडी नोज. तो ऐसा नहीं कि बस एक बुक में कहीं पे लिख दिया सी, अब आप उस सी को लेके ढूंढते फिर रहे हो कि सर ये तो सी लिख दिया है ना. तो ऐसा तो नहीं कि जो लिखा वो सही है, वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है ना. जो हम पढ़ रहे हैं वो सही, ठीक है ना. इसके हिसाब से जो ऑप्शन है आपके पास गेट में, दैट इज योर फाइनल आंसर. एंड देन आप उसके बाद दूसरे टॉपिक्स भी पढ़िए, दूसरी भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, है ना. सो द वॉल्व इज रिवर्स एक्टिंग ऑफ कोर्स. नाउ लेट अस कंसीडर अ सिनेरियो. आई हैव टू चेक द नेचर ऑफ कंट्रोलर. क्या बताए कैसे चेक करना है नेचर ऑफ कंट्रोलर. लेट, ये एग्जांपल मैंने इससे पहले कभी नहीं लिया, सो आई एम गिविंग दिस स्पेशल थर्ड एग्जांपल. तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये एग्जांपल किसी और को नहीं पता होगा. हाँ, अगर किसी को ये रट के बैठा है कि सर अगर वॉल्व रिवर्स एक्टिंग है तो कंट्रोलर डायरेक्ट एक्टिंग होना चाहिए, अगर आप ऐसा रट के बैठे हैं, देखिए कि वो आपकी कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगी. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये मत रटो, ठीक है. सपोज यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजन, सपोज यू डोंट नो कि कैसे करना है, you have to make a guess, there is only one chance left, then ठीक है, in that case you can do something, or you don't have time during the examination. वैसे मुझे लगता नहीं कि ये चेक करने में इतना टाइम लगेगा. देखो कैसे चेक करना है.
let the measured variable means T out increases, means it crosses the set point. T out is more than T out SS. Let the T out increases, है ना. This is the measured variable. मुझे ऐसे देखना, measured variable increases. If this increases, we want to decrease its temperature, means steam flow rate should be decreased, right? T out decreases, then ध्यान से सुनना, then controller takes decision, then TC takes decision to decrease the steam flow rate. TC takes decision, then TC takes decision to decrease the, obvious है ना, ये डिसीजन होगा. क्यों? कंट्रोलर को कैसे पता लगेगा? क्योंकि कंट्रोलर के अंदर आपने एनर्जी बैलेंस और मास बैलेंस और मोमेंटम बैलेंस और सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस कंट्रोलर के अंदर फीड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग. सो कंट्रोलर को एनर्जी बैलेंस आती है, तो कंट्रोलर अपने आप डिसाइड करेगा, इफ कंट्रोलर नोज द एनर्जी बैलेंस, दैट टू डिक्रीज दिस टेम्परेचर आई हैव टू डिक्रीज द स्टीम फ्लो रेट, टू डिक्रीज द स्टीम फ्लो रेट. ठीक है, दैट वाज द डिसीजन made by controller, that now I have to decrease the steam flow rate. Of course, for this the valve should be closed. I hope आप लोग समझ गए होंगे अब. For this the valve should be closed. For this the valve should be closed. ठीक है. If valve should be closed, this is air to open. Air to open valve, मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप इसमें क्यों कंफ्यूज रहते हो. एयर टू ओपन का मतलब है कंट्रोलर से सिग्नल जितना ज्यादा बढ़ेगा वॉल्व की ओपनिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी, पर मुझे तो वॉल्व को क्लोज करना है. द मोर इज द आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर, द मोर इज द ओपनिंग ऑफ द वॉल्व, बट आई वांट टू क्लोज द वॉल्व. इट मींस आई हैव टू डिक्रीज द कंट्रोलर आउटपुट. देयरफॉर फॉर दिस द वॉल्व शुड बी क्लोज्ड, एंड फॉर क्लोजिंग द वॉल्व, बिकॉज इट इज एयर टू ओपन, air will be increasing from the controller, the valve will be opened. Okay, for closing the valve, the controller output should decrease. The controller output should decrease. Now how to check? इतना पता लग गया. How to check? You saw that T out increases, measured variable increases, and controller output decreases. Means what type of nature, what is the nature of the controller here? Controller is reverse acting, because this nature are opposite. Controller is reverse acting. अब बताओ, अब आपके फंडे का क्या हुआ जो आप कह रहे थे कि सर अगर वॉल्व रिवर्स एक्टिंग होगा, अगर वॉल्व रिवर्स एक्टिंग होगा तो कंट्रोलर को डायरेक्ट एक्टिंग होना चाहिए. कहाँ है? नहीं है. आप डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर यहाँ रख लो. डायरेक्ट एक्टिंग मतलब आप सपोज इफ द कंट्रोलर इज डायरेक्ट एक्टिंग, फाइन, देन इन दैट केस इफ दिस इंक्रीजेस, तो कंट्रोलर को अपना आउटपुट इंक्रीज करना पड़ेगा. कंट्रोलर अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करेगा तो वॉल्व क्या होगा? और खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो ये और इंक्रीज कर जाएगा. तो ये तो स्टेबल ही नहीं हुआ, ये तो नेगेटिव फीडबैक ही नहीं हुआ, है ना. द सिस्टम वोंट रिमेन अनस्टेबल. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गेट में कभी आ गया, ठीक है, क्योंकि भाई आपको बता रहा हूँ बहुत टाइम से आया नहीं है, इसलिए ये जो आपने फंडा बनाया है कि नहीं डायरेक्ट के साथ रिवर्स ही आता है, रिवर्स के साथ डायरेक्ट ही आता है, दिस कैन बी ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट. दिस कैन बी ट्रू. ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब जो फंडे हैं, देखो वॉल्व में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं. वॉल्व में ये कंट्रोलर एक्शन में भी और भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बट मुझे आपको जो बताना है वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है. ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अभी आपको पता ही नहीं है, पर उसको लाके मैं जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, और होता क्या है, आपको जैसी कोई नई चीज बताई आप उसमें लग जाते हो, फिर जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे से आपका ध्यान भटक जाता है ना. तो आपको मेन पोर्शन पे, जो मेन सिलेबस है अपना, जो कंट्रोल है, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन जितना है, जितना पोर्शन आ रहा है उस पर ध्यान रखें. ठीक है, दिस एग्जांपल आई स्पेशली टुक टू क्लियर आउट द कंफ्यूजन दैट इफ द वॉल्व इज डायरेक्ट एक्टिंग, इट इज नॉट नेसेसरी that controller should be reverse always, or if the valve is reverse acting, it is not necessary that the controller should be direct always. You can consider, this is the third example. I hope ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, आपको कंट्रोलर एक्शन चेक करना अच्छे से आ गया होगा. ठीक है, तो इसको यहाँ मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं towards the advanced control strategies. The first advanced control strategy I'll be talking about is cascade control strategy, right? And please note that in advanced control strategy we don't need to discuss a lot, बिकॉज ये कई बार आप मास्टर्स में पढ़ोगे दैट व्हाट आर द एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजीज. कई बार ये सब्जेक्ट होता है मास्टर्स में, एडवांस प्रोसेस कंट्रोल.
यहाँ गेट में बहुत थोड़े सवाल आते हैं यहाँ से, है ना, बट वी विल डिस्कस कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. So far, so I was saying that so far we have discussed only feedback control. Fine. The first advanced control strategy is cascade control strategy. Put the heading cascade, and this cascade is most widely used in industries also. Cascade control strategy. और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं. आई थिंक आपको मैंने शुरू में नाम लिखवाए थे, है ना. कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटेजी. पुट द हेडिंग. Before starting the actual discussion, first of all, you know that in feedback control what happens, right? So cascade के लिए पहले कुछ points लिख लेते हैं जो आपके पास in the form of questions आ सकते हैं. What are those points? First of all, in cascade control strategy also, we use feedback control only. Means cascade control is also a type of feedback only. Use feedback control only. Then what is the difference between these two? देखो feedback की सबसे जो खासियत है, सबसे important property, the most important property of feedback, the most important characteristics of feedback. If you ask me the most important, there are two most important characteristics. The first thing, the variable which you are controlling should be measured. First thing, in most of the cases. Second thing, that in feedback control, the action is always taken after the effect of disturbance has been felt by the control variable. Are you getting this? These are the two most important things in feedback control. So cascade is also kind of feedback control. So what is the difference? The difference is it is a multiple loop control strategy. It is a multiple loop feedback control. We can say that cascade control is a multiple loop feedback control. So what is the difference between the simple feedback and cascade control? That there will be more than one loops. Loop matlab ye those I am talking about the block diagram. There was only one loop. There will be multiple loops here. Not necessarily two. It can be more than two also. तो जो ये छोटी confusion है, these questions can be asked in the form of true false, right, or in the form of MSQ, that which of the following is true for a cascade control. So cascade control is the strategy which we are using here is still feedback, but we have multiple loop feedback control. What else here will be different from the feedback control? Right out. Second point, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इस चीज को थोड़ा सा समझो कि कैस्केड और ये जो एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो थ्योरी पे थोड़ा सा यहाँ पे जोर देना है. अभी तक जो ट्रेंड देखा है इन कैस्केड एंड इन फीड फॉरवर्ड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम आए हैं, फीड फॉरवर्ड से थोड़े आ जाते हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और आपको पता है आप न्यूमेरिकल कर जाओगे, पर जहाँ थ्योरी है ना वहां फंस जाओगे. तो थ्योरी के लिए, थ्योरी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए. ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के जाओगे, शायद आप फॉर्मूला याद हो, न्यूमेरिकल डायरेक्ट कर पाओ, बट थ्योरेटिकल में फंस जाओगे. और अगर एमएसक्यू आ रहा है तो और फंस जाओगे. देखो एमएसक्यू का फंडा बता दूं कि एमएसक्यू वो कोई बहुत बड़ा, इट्स नॉट काइंड ऑफ नाइटमेयर. एमएसक्यू आप पहले भी आ चुके हैं गेट में इन वेरियस फॉर्म, दैट विच ऑफ द वी हैव 5 स्टेटमेंट्स सपोज, एंड आउट ऑफ दीज 5 स्टेटमेंट्स say only 1 is true, only 2, 3 and 4 are true, like these kind of statements are there. लेकिन अगर MSQ को problems आ रही हैं, then you should have the complete knowledge of that topic, then only you'll be able to solve MSQ. तो एक सही है ये ढूंढना आसान होता है, बट कितने सही है पता ही नहीं और फिर ढूंढना हो, then it is difficult. Then the proper knowledge of the concept is required. इसीलिए मैं आपको शुरू से जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा डीप में जाके दे रहा हूँ, थोड़ी सी अलग अलग तरह से, और सिंपल करके देता हूँ हर चीजों को बहुत, है ना. आपको फील हुआ होगा कि आपको जो कंट्रोल पढ़ाया काफी सिंपल करके पढ़ाया, चीजों को ज्यादा ऐसा नहीं कराया कि यार डर गए कि अब ये क्या है. ठीक है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इन कैस्केड कंट्रोल वी यूज फीडबैक कंट्रोल स्ट्रेट ओनली, एंड इट इज अ मल्टीपल लूप फीडबैक कंट्रोल. वन मोर थिंग, इफ यू हैव नोटिस्ड इन फीडबैक कंट्रोल, इन कन्वेंशनल उसको बोलते हैं कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोल, है ना. इन कन्वेंशनल फीडबैक कंट्रोल, so these words you should be familiar of. In conventional feedback control, we have only one measurement, and one manipulated variable. I hope you understand what is manipulated, what is measurement.
manipulated variable. So conventional feedback. Cascade में while in cascade control क्या लगता है? While in cascade control more than one measurements are there. Measurement एक से ज्यादा होगी. I'll clarify the rest of your doubts. चिंता मत करो. Cascade control more than one measurement is there. More than one measurement is there. So that is one more is there. So that is one more characteristics of cascade control, that multiple measurements are there. So the doubt arises, sir, what about manipulated variable? And what about controlled variable? In conventional feedback, we have only one measurement and one manipulated, while in cascade control, more than one measurement is there. While manipulated variable is only one there, but a single manipulated variable. I'll take example, don't worry. And a single manipulated variable. ठीक है? Single manipulated variable. Correct? That is one more characteristic. Now the question arises, कि sir, is it the case that in cascade control, because we are taking multiple measurements, what can you say about the controlled variable? Are the controlled variable more than one in case of cascade? In case of cascade control, because we are also saying that we have multiple loops. No, the objective is to control a single variable, but for controlling a single variable, we have multiple measurements and one manipulated variable. That is also important. That write down that in cascade control, we are taking multiple measurements, right? We are taking multiple measurements. It does not means multiple measurements, full stop. It does not implies that controlled variable is also more than one. We have objective of controlling only one variable. However, we are making multiple measurements. Okay, it does not implies that more than one controlled variable is there. More than one controlled variable is there. More than one controlled variable is there. Okay, controlled variable is there. Correct? That is the third characteristics. So cascade में जो सबसे important चीज है वो क्या है? सबसे important, जैसे feedback में मैंने आपको सबसे important बताया. अच्छा, यहाँ भी देखो, यहाँ भी because it is a type of feedback loop only, so it will also act in a compensatory manner, right? So just like feedback, cascade is also compensatory. Write down this also. This is a kind of similarity. We are writing various points ना, तो मैंने differences बताया, कुछ similarity भी है. Because cascade is also a special type of feedback control. Because cascade control or cascade control strategy is also a feedback control. So it also acts in a compensatory manner. So ऐसा नहीं है कि cascade में यार disturbance का असर होने से पहले ही action हो जाएगा. No. Are you getting this word compensatory? This word compensatory manner. लिख लो अभी लिख लो. What is the meaning when I say compensatory? It means, लिख लो अभी, compensatory. What it means? Compensatory means first the system will feel the effect of disturbance and thereafter the controller is going to take corrective action. Okay, compensatory means first of all, effect of disturbance will be felt by the system. Sorry. Effect of disturbance will be felt by the system, and after this the corrective action shall take place. After this the corrective action shall take place. ठीक है? That is when I say compensatory, it should be clear. Compensatory.
First of all, your loss will be there and thereafter some help will arrive. That is called compensation. I told you various examples like the damage caused due to floods, the damage caused due to earthquakes. तो हेल्प आपके पास डैमेज होने से पहले नहीं आ जाती कि ये लो घर बना लो, अर्थक्वेक आने वाला, ऐसा नहीं है. फर्स्ट अर्थक्वेक occurs, natural calamity occurs, flood occurs or other kind of situation occurs, and thereafter we plan to provide relief, we plan to provide help. That is called compensation. So feedback control is a kind of compensatory control, and cascade is also a feedback control, right? So now the question, these are the characteristics. Now the question arises, कि sir, if cascade is also a feedback control, and there are few differences as I discussed here, in which case it is good to use cascade, or what are the examples where we use cascades? So let me give you a few examples, and I'll show that how cascading is used. Correct? So we will continue writing these characteristics, but before that, now for writing the fifth point, I'll require to explain first the examples. तो पहले examples देख लेते हैं, thereafter I'll continue this. ठीक है, तो आप note कर लो, मैं इसको erase करता हूँ. I'll discuss two examples of cascade control, and cascading can be used in any case in heat exchanger, in distillation column, in reactors, everywhere. Cascade control strategy can be used in real life also. Everywhere you will feel cascading. Cascading is there. I'll tell you how. But before understanding the real life situation, I'll relate with the real life situation also. Let us understand with respect to the chemical engineering point of view. Suppose we have a liquid heater. Suppose we have a liquid heater. Jacketed liquid heater. Jacketed, this is the perfect example which is most of the time discussed by most of the persons to explain cascade control. Jacketed liquid heater. That is one example where I will use cascade. But to understand the advantage of cascade, first of all, we'll have to make a conventional feedback loop here. पहले conventional बनाऊंगा तभी उसका फायदा नुकसान समझ आएगा, उसका फायदा समझ आएगा. तो क्या cascade लगाना हर बार जरूरी है? क्या cascade के बिना काम नहीं बनेगा? Is cascade really important? आप cascade नहीं लगाओगे तो control नहीं होगा. What is the problem? So we'll see. We'll write down all the points after point number 4. But before that, I'll take two examples. Okay? So jacketed liquid heater. Let's take, there is a heater, right? Or there is a kettle or heater, whatever you want to say. Suppose there is this kind of process. We are using this process to heat a liquid. Correct? So there is a liquid. Perfectly stirred, as most of the cases are perfectly stirred. The inlet temperature is T, right? The liquid is getting heated and then leaving at T out. What is the purpose? The purpose is to control this liquid temperature. This temperature is also T out. How this is being heated? This is being heated with the help of a jacket. You understand what is jacket? Jacket means an arrangement is made which surrounds the entire kettle and a fluid flows through this, and then heat transfer occurs from the fluid in the, right? This is your process fluid, okay? This is your process fluid. This is called process fluid, okay? Now this heating is taking place with the help of steam or hot oil also, you can say. Let's take hot oil, not a problem. Let's take hot oil. This heating is taking place with the help of hot oil. From here, we have hot oil. Hot oil, this is the jacket fluid. This hot oil is the jacket fluid. So jacket fluid hota hai, fir process fluid hota hai. This is the process fluid, okay? This hot oil is entering the jacket, okay? It is flowing through the jacket, and meanwhile, this hot fluid is heating the system, and then it is also leaving the system, right? So jacket fluid out. We are not interested in jacket fluid, however. What we are interested? We are interested in controlling this kettle temperature. Jacket fluid out. Jacket fluid means hot oil out. Okay, this is hot oil in. So we are using oil which flows through the jacket and heats the liquid in the heater. So this is called a jacketed liquid heater. Normally, in conventional feedback control, what is the control variable here? T out. T out is the control variable. So in conventional feedback control, it is very simple. You can, now I hope aap itna to kar loge. You will take measurements of this
thing which we want to control. So temperature transmitter. This temperature transmitter goes to the temperature controller. To the temperature controller, I'm going to provide the set point T out SS, and this temperature controller adjusts the valve flow rate and hence the oil flow rate, valve flow rate meaning oil flow rate, and then the process set point is maintained. Of course, the feedback loop works well. सारी चीजें बड़े आराम से चलेंगी यहाँ पे. Feedback loop is going to take action, right? And it will try to maintain this reactor temperature at. Is it cascade control strategy? No, this is feedback only. What is how this loop the diagram will be different from the conventional feedback? We'll see. अभी मेरे को points लिखवाने और बाकी हैं. अभी cascade के points सारे लिखवाए नहीं, तो पहले समझ लो. Now what is going to happen here? Suppose what is the problem with the feedback? Problem समझ आएगी तभी cascade की importance समझ आएगी, है ना? That's why I'm saying why cascade and in which cases cascade will be good for you. So what is the problem here? See, this feedback control is going to work well. आपने कहा कि सर मैंने PID कंट्रोलर लगाया, PID कंट्रोलर इज रियली फास्ट, और इफ यू इन योर केस सपोज ऑफसेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, आपने हो सकता है डी ना लगाओ, PI कंट्रोलर भी लगाओ, काम चल रहा है अपना, ठीक है. ओके, यू वांट टू कंट्रोल द टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर टेम्परेचर वी कैन यूज PID. सो ओके, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी एंड व्हाई कैस्केड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सपोज व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अ फ्लक्चुएशन. इसके फ्लो रेट में फ्लक्चुएशन. अच्छा, यहाँ पे मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या है? कंट्रोल वेरिएबल इज T out. व्हाट इज द मैनिपुलेटेड वेरिएबल? थिंक अबाउट इट. द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज हॉट ऑयल फ्लो रेट. Flow rate we are changing for the hot oil. So manipulated variable is hot oil flow rate. Okay, but suppose there is a change. There is a change in hot oil temperature. आप बोलोगे सर इसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है क्या? सपोज इफ दिस इज द सिचुएशन, in reality of course it can change because this hot oil is coming from some other source. If there is some disturbance there, hot oil temperature, आप बोलोगे सर वॉल्व है ना कंट्रोल करने के लिए, बट वॉल्व इज नॉट कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल. भाई वॉल्व को बंद करने से क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा? क्या? नो, वॉल्व कैन ओनली कंट्रोल द फ्लो रेट. तो फ्लो रेट, वॉल्व इज गुड, वॉल्व इज कंट्रोलिंग द फ्लो रेट, बट सपोज if the hot oil temperature is changing, then what is going to happen? Let's take one example. अब आप सोचना यहाँ पे बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग लगाओगे यहाँ पे. Let initially it was working fine at steady state. Let the hot oil temperature increases. What is going to happen? Let hot oil temperature increases. Up arrow means increases. आप चाहो तो ऐसे लिख लो. Let hot oil temperature increases. If temperature increases, driving force is going to increase. There will be more heat transfer to the liquid because rest of the things are same as before. So temperature increases, then more heat transfer will occur. More heat transfer will occur, and more heat transfer will occur, and from where will occur? From the jacket to the liquid. From the jacket to the liquid will occur from the jacket to the liquid. From the jacket to the liquid, which leads to increase in fluid temperature. Increase in fluid temperature. And of course, if this fluid temperature increases, the transmitter will send this information to the controller, and then the controller will know कि okay, I have to do something, right? Fluid temperature leads to increase in fluid temperature, and now the controller will take action. Controller will take action. तो आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग इज फाइन. Yes, everything is fine. Controller will take action. It will adjust the valve flow rate and things will become good. Okay. But the problem is this entire thing that देखो यहां जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ, सपोज दिस टेम्परेचर चेंजेस, इसको कुछ पता लगा क्या? नो, दिस टेम्परेचर कंट्रोलर is only getting information about this temperature.
the temperature controller is getting information from the transmitter that this has changed or not. But suppose if this temperature changes, it will change the reactor temperature. If reactor temperature changes, अभी बहुत सारी प्रोसेस है बीच में, मैंने हो सकता है लिखा ना हो. If this temperature changes, it will change the jacket temperature. Sorry, it is not reactor. Jacket fluid temperature. If jacket fluid temperature changes, then more heat transfer will occur and it will change the fluid temperature, and then this transmitter will tell the controller. During this, it will take time. मैं आपको dynamics पढ़ा रहा हूँ है ना. We are dealing with dynamics. It is not instantaneous. This process is going to take time. But in that time interval, see, it will take action, but this response time will be more. But this response time will be more. And obviously चीज है कि कंट्रोलर जब एक्शन लेगा कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक आपका ये जो रिएक्टर, जो आपका हीटर का फ्लूइड टेम्परेचर है, वो सेट पॉइंट से काफी देर तक डेविएट रहेगा. सो द प्रॉब्लम इज फीडबैक कंट्रोल इज फाइन, बट समटाइम्स इन सच केसेस इट इज स्लगिश. आप बोलोगे सर मैं पीआईडी लगा दूंगा. ऑफ कोर्स आप पीआईडी लगा सकते हो. रिस्पॉन्स विल बिकम फास्ट एज कंपेयर टू द रिस्पॉन्स ऑफ पीआई कंट्रोलर, बट स्टिल यू मे नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स. तो आप बोलोगे सर वो तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं हैप्पी हूं कि नहीं हूं, तो मुझे कैस्केड लगाना है कि. ऑफ कोर्स आप अगर आप हैप्पी हो तो कैस्केड की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू नो कि इवन इन दिस केस you can be happy with the feedback control action. Now it totally depends that what is the time of all these individual elements. भाई कहीं ना कहीं अगर ज्यादा लैग हो गया तो वो लैग पूरे प्रोसेस के लैग में जुड़ेगा obviously, and then for the you will having your control variable deviated from the set point for a longer period. My point is कैस्केड ऐसा नहीं कि कैस्केड कंट्रोल नहीं हो गए तो मतलब रिएक्टर ही फट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. इट विल वर्क फाइन, बट it will be away from the desired value of set point for a longer period. But this response time will be more. क्योंकि देखो भाई यहां पे जो चेंज हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, क्या इसको डायरेक्टली पता लगा? क्या पता ही नहीं लग रहा. ये तो भाई क्या करे, तो फ्लो रेट को घुमा रहे. अब यहां कोई चेंज हो गया, दिस चेंज इज गोइंग टू चेंज दिस टी आउट. तो यहां का चेंज इसको जब इफेक्ट करेगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा और फिर ये इसको बताएगा, देन इट इज गोइंग टू टेक एक्शन. सो इन बिटवीन every element is going to take some time. आपको क्या लगता है, the moment this temperature changes, क्या उसी समय जैकेट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? No, it will take time. The moment jacket temperature changes, moment के jacket temperature will change gradually. Okay, now jacket temperature will change gradually. This temperature will also change gradually. It will also take some time. Now as this temperature changes gradually, and now suppose अगर ये temperature transmitter is having some lag in measurement, it is not very fast, it is not instantaneous, then for a larger period of time, for a longer period of time, this temperature will remain away from this step. इसको पता ही नहीं है ना यार, जब इसको बताओगे नहीं तो एक्शन कैसे लेगा? तो this transmitter is going to tell this control and then it will take action. So what is the problem? The problem with conventional feedback control, not always in these kind of problems, the problem is the response time will be more, and suppose and if some elements means can be the transmitter, can be this, right, various elements, and if some elements have large dead time, then the process will be deviated from its set point, set point for a longer period of time. Longer, समझ रहे हो? क्योंकि भाई पता ही नहीं लगेगा कंट्रोलर को कि कुछ हुआ है. Longer period of time, and hence ultimately the response will be sluggish. तो बोलो सर पीआईडी का भी रिस्पॉन्स sluggish होगा. हाँ, it totally depends upon your expectations. What kind of control you want? एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है ना भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? You can be happy with gate rank 700. Totally depends upon your expectations. You cannot be happy with gate rank 50. Depends upon your expectations. So that's why I'm telling कि इसमें ऐसा नहीं कि आप कैस्केड नहीं लगाओगे तो काम ही नहीं करेगा, कर तो रहा है. If you are happy with this performance, that's all good. Of course, applying cascade control strategy will require some cost. So that is the problem. Ultimately problem है कि फीडबैक का जो ये कंट्रोल है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आपके लिए. मैं बस सेटिस्फैक्ट्री वर्ड यूज कर रहा हूँ. If it is not satisfactory, because
this information has to pass through the temperature and then to the controller कि हाँ अंदर कुछ हुआ है ड्यू टू दिस. अगर यहाँ पे कहीं अगर लंबा सपोज इस ट्रांसमीटर में बीच में कोई और कंपोनेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इन एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे कहीं पे ज्यादा डेड टाइम आ गया तो इसको पता लगते लगते पता है कितनी देर हो जाएगी. समझ रहे हो? आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी कि हर बार ऐसा हो. हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो. एंड इन दैट केस कैस्केड वोंट बी रिक्वायर्ड, राइट? इफ देयर आर नो लॉन्ग डेड टाइम एसोसिएटेड विद एनी कंपोनेंट, सपोज द कंपोनेंट्स आर फास्ट, तो ठीक है, चलेगा, द रिस्पॉन्स विल बी सेटिस्फैक्टरी. बट in the case if the some elements are having large dead time, then the process will be deviated from its set point for a longer period of time, है ना? कुछ कंट्रोलर में भी कुछ डेड टाइम होंगे, कंट्रोलर के एक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. कंट्रोलर ने एक्शन तो लिया लेकिन उसको यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग गया. वॉल्व में कुछ सिचुएशन हो सकती है कि वॉल्व व्हाट कंट्रोलर इज गोइंग टू डू, द कंट्रोलर विल चेंज दिस, राइट? नाउ दिस इज गोइंग टू चेंज दिस, एंड अगेन उसका असर होने में भी तो टाइम लगेगा ना यार. The controller is going to change the flow rate. Now the effect of that changed flow rate is going to take some time to reach here. So in this duration, your control variable will be deviated from the set point for a longer period of time. That is the problem. So what is the solution? The solution is apply cascade control. How to apply cascade control? What is the solution? I'm giving you the solution here. That what you did, that in cascading, you have everything same, the process is exactly same, okay? What you did, that you hired a junior, you hired a trainee nahi kahenge, chalo junior, under you. This is you, but you are not happy with your performance. Cascade is basically hierarchy. Cascade in real life, you see, there is everywhere there is hierarchy. I'll come to this point. So what you did, you hired a junior and then you distributed the workload. आपने एक जूनियर हायर किया, आपने एक, है ना, स्लेव नहीं बोलना चाहिए बट कंट्रोल में उसको स्लेव बोल देते हैं, ठीक है? आपने एक जूनियर हायर किया, स्लेव इसलिए बोल देते हैं कि वो आपकी बात मानेगा बस. You are going to instruct the junior that you have to do this, you have to do that. This is T out. We want to control T out. Fine. Hot oil was coming from here. Exactly same. Everything is same. See how we are going to change the things. And then this is oil out. This was the problem. Now everything is same. I'm taking one measurement here. This is the one measurement which was earlier also going to the transmitter and then it goes to the controller. I'll call this controller as TC1. Okay, goes to the controller. Now earlier this was the situation, but this controller, what this controller is doing, this controller is also taking one more measurement. One more measurement is there, and okay, this controller is not directly linked to the valve. There is one more controller. This controller hires a junior controller which is TC2. ठीक है? TC1 ने एक जूनियर को हायर किया, उस जूनियर का क्या नाम था? TC2. एंड ही सेज कि तुझे वही करना है जो मैं कहूंगा, तू अपना दिमाग मत चला, ठीक है? TC2 is going to do everything as instructed by TC1 and that is why TC2 is called junior controller. Junior word नहीं यूज करते, slave controller or secondary controller. Okay, so TC2 is not going to use its own brain, it is going to do as instructed by TC1. So TC1 is going to give instruction. First of all, okay, yeah, one thing was missing, na? To TC1 I'll also give a set point, that is T out access. ये कौन देगा? ऑपरेटर. भाई सबसे ऊपर तो ऑपरेटर है. कंट्रोलर इज जस्ट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट. वो आप उसको जैसा बोलोगे, जो सेट पॉइंट दोगे उसके हिसाब से काम करेगा. नाउ TC1 compares this set point and the measurement. Accordingly, it decides that what TC2 has to do. Not necessary to make this. आप सीधा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है. TC1 is actually deciding the job to be done by TC2 and that is why TC2 is a junior. नया नया आया अभी, ठीक है? तो जब नया नया कोई रिक्रूट आता है, कोई नया नया ट्रेनी आता है, तो जो उसके सीनियर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इसके मजे लेते हैं, सारे काम अब इसी से करवाएंगे, है ना? जो भी छोटे मोटे काम आपके होता है आप उसी से करवाते हो, राइट? सो TC2 is kind of a fresher, kind of junior, kind of slave, kind of trainee, kind of recruit. So TC2 will do as instructed by TC1. So TC1 is going to set the you can say set the target. TC1 TC2 को टारगेट देगा, भाई तुझे ये करना है, राइट? सो यू कैन से
in control language that TC1 is going to give set point to TC2 कि तुझे जो बोलूंगा उसी को करना है, पूरा को टास्क देगा ना, काइंड ऑफ टास्क देगा. So TC1 is the boss, TC2 is the trainee, is the new recruit, right? So this TC2 will do as instructed by TC1, but for doing the things, this TC2 will also take one more measurement, and that is it will take the measurement from the jacket temperature. One more measurement will be there. So as I was saying that in case of cascade control, there are multiple measurements. Now you can see here, I'm also taking the measurement of this liquid reactor, and I'm also taking the measurement of this TC2, this jacket. So there are multiple measurements. पर क्या मुझे जैकेट का टेम्परेचर कंट्रोल करना है? नो, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कंट्रोल द जैकेट टेम्परेचर, द ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द हीटर टेम्परेचर, लिक्विड टेम्परेचर ओनली, जो आपका मेन प्रोसेस स्ट्रीम है. तो ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव. बट आई एम ऑल्सो मेजरिंग वन मोर थिंग, राइट? अकॉर्डिंगली दिस TC2 will adjust this. This is cascading, and you can see there are two loops. One is this loop and one is this loop. There are two loops. उसी के अंदर एक छोटा सा लूप हो रहा है. तो that is, जब इसको आप ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो it will, you can see yourself that what are the loops. This is called cascading. So what you came to know that cascading आपने कर तो दी. This is how the control diagram should be there. What are the main features of this? From this diagram, what you understand is the fifth point. What is the fifth point? In cascade control, see, TC1 is the master controller or primary controller or the boss. In cascade control, master controller means master controller, master और slave होते हैं ना. master controller ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, देखो TC1, और you can say primary controller, or you can say boss, primary controller or boss. Boss is always right. Boss gives instruction. You have to perform it. You have to do it. आप नहीं बोलोगे कि ये क्यों दे दिया, उसने जो बोला करना पड़ेगा. ठीक है? I'll discuss this again. In cascade control, the master controller gives the set point to slave controller. And who is slave controller? Slave controller के लिए अलग दूसरे नाम क्या है? Either you call it TC2. It's not always TC2, but दो ही कंट्रोलर है यहाँ पे, TC2, और what else? Secondary controller. And you have to understand this as recruit or trainee, secondary controller. So what is one more feature of cascade control? That in cascade control strategy you have more than one controllers, not necessarily two, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं. In cascade control we have more than one controllers, and the primary controller, okay, I'll come to this point. लिखते हैं, ठीक है, 6 पॉइंट लिखते हैं, पहले नोट कर लो. ये बात समझ आए कि कैस्केड कंट्रोल में देखो कंट्रोलर एक से ज्यादा होंगे, क्या 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, 6 पॉइंट. इन कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी, कई बार बच्चे वर्ड यूज करते हैं कैस्केड कंट्रोलर. देयर इज नो मीनिंग ऑफ कैस्केड कंट्रोलर. तो कंट्रोलर और कंट्रोल स्ट्रेटजी में अंतर पता होना चाहिए कि कब कंट्रोलर बोलना है और कब कंट्रोल स्ट्रेटजी बोलनी है. यू शुड नो दिस. इन कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी, डोंट राइट कैस्केड कंट्रोलर हियर. इन कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी मोर देन वन कंट्रोलर इज देयर. कंट्रोलर डेफिनेटली मोर देन वन होगा भाई. अगर ये यहां कंट्रोलर नहीं होगा, ये मेजरमेंट किसके पास जाएगा? कंट्रोलर मोर देन वन होना ही होना है. दैट इज वन मोर फीचर. इन कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी मोर देन वन कंट्रोलर इज देयर. अब यहां पे क्या, इफ मोर देन वन कंट्रोलर इज देयर, नाउ देयर आर सम फीचर्स. द कंट्रोलर टू विच set point is given by the operator. Set point is given by the operator is the primary controller. Master controller by the operator is the master controller. लिख लो, which one is master controller? TC1. This is how you have to identify कि cascade controlling में अगर आपको master controller identify करना है, then check the controller to which set point is given by the operator is the master controller.
right? Now you may ask, sir, what will happen if there are three controllers? If there are three controllers, the controller to which set point is given by the operator is master and all of the rest are slaves. लेकिन slave भी क्या होगा? That's why I'm saying that cascade control is like hierarchy. Let us write this point. एक ही साथ सारी बातें करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? Okay. In cascade, suppose, okay, what happens that you can say that this is the senior, this is the junior, उसके नीचे जो आएगा उसका junior, उसके नीचे जो आएगा उसका junior, right? So a cascade control can be thought of. Cascade control can be thought of. अगर आप real life में बात करो cascade control की, so it can be thought of hierarchy. Hierarchy, I think spelling correct है, नहीं है तो एक बार कर लेना, ठीक है? Cascade control can be thought of hierarchy. Hierarchy means आप कहीं भी जॉब करते हो तो आप एक there is a hierarchy in any organization that you have to report to him, you have to report to him, you'll get instruction by him. कई बार क्या होता है in any organization आप डायरेक्ट CEO से इंस्ट्रक्शन लेते हो क्या? नहीं, आपका टीम लीडर होता है. In any organization, if you have freshly joined, then you will take instructions not from the MD or from the CEO. या suppose if you are in a government job, if you are in a PSU, क्या आपको धर्मेंद्र प्रधान जी सीधा इंस्ट्रक्शन देंगे? नहीं, आप सीधा मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शन लोगे क्या? नहीं. Your immediate senior is going to give you instructions. If you are working in a private job, in a private firm, आप रिलायंस में तो आपको अंबानी आके नहीं बताएगा तू ये कर. आप अगर रिलायंस में हैं तो आपका जो सीनियर है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा. और आपके सीनियर को कौन, क्या एमडी इंस्ट्रक्शन देगा? नो, देयर इज ऑलवेज अ हायरार्की. देयर आर 100 ऑफ पीपल इन दिस हायरार्की, इन दिस ट्री. एक ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा एक ट्री होती है. आप जब भी कभी इंटरव्यू देने जाओ तो कम से कम उस ट्री के ऊपर के 4-5 लोग उसके बारे में जान के जाओ. इट इज इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर अपेयरिंग इन एन इंटरव्यू, यू मस्ट नो दैट हु इज इन द टॉप ऑफ द हायरार्की. If it is a minister, if it is government organization, in which ministry it is there. I mean, if in ONGC is falling under petroleum and natural gas ministry, who is the minister? So, and who is the CEO? Who is the director offshore? Who is the director? So, in any organization, there are MDs, there are directors, there are CEO, there is a minister, there are IAS, then there are the managers, then there are the team leaders, then आप कहीं हो छोटे से you, है ना? तो there is a hierarchy. And in hierarchy का फायदा क्या है? I'll come to that also. That is one advantage of cascade controller. So cascade control can be thought of hierarchy or can be thought of distribution of decision making. बहुत अच्छी मतलब ये लाइन जो आपको लिखवा रहा हूं लिख लो. Distribution of decision making. दिस इज द मीनिंग ऑफ कैस्केड. अगर आपसे कोई कभी आप इंटरव्यू में पूछे ना कि कैसे, ये गेट में इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो उसको पता है कि ये नहीं, आपको आप गेट में तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं. बट व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, आई विल टेल यू दैट फॉर इंटरव्यूज दीज एडवांस कंट्रोल्स, particularly cascade, is very important. This question was asked to me in the ONGC interview, that there was a distillation column, make cascade, and they started asking which one is primary, which one is controlling, and by chance I was becoming over smart कि sir I did not make this TT, मैं सीधा कंट्रोलर बना दिया. मुझे लगा उनको पता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं सोचते उनको पता है. देन दे पॉइंटेड आउट कि देयर मस्ट बी समथिंग एल्स. आई सेड यस, दैट शुड बी ट्रांसमीटर, राइट? सो सारी चीजें बतानी है, ऐसा नहीं कि सर उनको तो पता होगा. पता तो सब है, फिर पूछते क्यों आपसे, है ना? सो कैस्केड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज. एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, वहां तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराएगा, है ना? सो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज यूज. तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैस्केड को आप कैसे समझते, यू शुड से दैट कैस्केड कैन बी थॉट ऑफ हायरार्की और कैन बी थॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग, राइट? सो इट मीन्स जूनियर कंट्रोलर. क्या आप जूनियर वर्ड को आप समझ रहे हो ना? अच्छा, आप बोलोगे कि सर अगर सपोज इफ देयर आर 5 कंट्रोलर्स इन कैस्केड, देन विच वन शुड बी कॉल्ड एज स्लेव? The top one will be master and all of them are slave, but the bottommost controller is the slave of the topmost controller. He is the slave of the topmost. तो ये slave, यही hierarchy. This is the hierarchy of any organization, right? So when there are multiple organization, okay, multiple controllers, in that case you can write that a junior controller receives instruction, and in control language it is called set point from the immediate senior controller. ठीक है? A junior controller means this. A junior controller is
जूनियर कंट्रोलर ऑलवेज रिसीव्स, तो जूनियर कंट्रोलर सपोज एक कंट्रोलर यहाँ पे है तो उसको सीधा ये इधर बीच में आके ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देगा. नोबडी ब्रेक्स द चेन ऑफ हायरार्की. Every information should pass through the chain of hierarchy like in a proper. If hierarchy is not working properly, then आप देखोगे in real life in organization, अगर आप hierarchy को follow नहीं करते हो, then there are problems. आपको सीधा रिपोर्ट करनी होती है कि आपका जो टीम लीडर है बोलेगा तू मैनेजर के पास क्यों गया, तेरे को पहले मुझे बताना चाहिए था, फिर वो आपको परेशान करेगा. then there will be troubles in your life, है ना. if you are facing any problem, आपने अपने इमीडिएट सीनियर को रिपोर्ट ना करते हो, आप ज्यादा शाणे बन गए, आप चले गए उधर, ठीक है, उधर से भी सुनने को मिलेगा, इधर भी सुनने को मिलेगा. दैट यू हैव टू फॉलो दी हायरार्की. सो इन कैस्केड हायरार्की इज फॉलोड. कैस्केड ये तो मशीन है, इनको दिमाग नहीं कि सीधा इससे जाके पूछ लें कि भाई मुझे क्या करना है, ये तो अपने ऊपर वाले से पूछेंगे, ठीक है. सो अ जूनियर कंट्रोलर ऑलवेज गेट्स इंस्ट्रक्शंस इनसाइड ब्रैकेट, यू कैन राइट सेट पॉइंट. इंस्ट्रक्शंस इनसाइड ब्रैकेट यू राइट सेट पॉइंट. A junior controller always gets, मैं इस फ्लो में चल रहा हूं, लिख लेना, always gets instructions from, I'm writing, this is important, from immediate senior controller. Immediate समझ रहे हो, just ऊपर वाला, immediate senior controller. So this is one characteristics of this cascade control, senior controller. बात समझ आई कि एक कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी में जो चेन ऑफ हायरार्की है, इस चेन ऑफ हायरार्की में जो इमीडिएट सीनियर कंट्रोलर है वही उसको सेट पॉइंट देगा. सो ईच in cascade the primary to the primary controller the set point is given by the user, the operator, but to all secondary, देखो ये ऊपर वाला उसको सेट पॉइंट देगा, ये वाला इसको सेट पॉइंट देगा, ये वाला इसको सेट पॉइंट देगा, like that. So each controller receives its set point from the immediate controller. That is called chain of hierarchy. That is called distribution of decision making. I'll tell what is the detailed meaning of distribution of decision making. This is what happens in any organization. Now let's come to this point, distribution of decision making. अब ये 6 point में चल रहा है, इसी में लिखना. What is the meaning of distribution of decision making and why it is so good? Now let us take real life example. I told you that कि पहले मैं आपको chemical engineering का example दूंगा. Now what happens here? See, now suppose we have to maintain this temperature at 70 degrees Celsius. Temperature transmitter gives TC1 that this temperature is 70 degrees Celsius. TC1 receives the input. Now TC1 is just going to decide that for maintaining this temperature to 70 degrees Celsius, what should be this flow rate. Okay? So उसको उतना करने के लिए, okay, no, sorry. It is going to, this is cascade, sorry, correcting myself. This TC1 is just going to decide what should be the jacket temperature. That's it. Okay. That is called distribution of decision making. Earlier, what it was deciding? Earlier, this TC1 was deciding that what should be the jacket temperature. For that jacket temperature, what should be the flow rate. For that flow rate, what should be the valve opening. For that valve opening, what should be my output. So earlier what was happening, when there was only one feedback controller was there. So what was happening, that all the decisions was taken by only one controller, TC1. In real life, suppose you are preparing for exam. इसको ऐसे समझो, you are preparing for exam. अगर आपको सिर्फ मैं एक चीज कह दूं, there are two situations. There is one situation where you have to prepare exams. You have to manage your final semesters if you are in BTech, or if suppose you are in MTech, you have to manage your first semester of masters also, right? Suppose you are the sole member of your sole son or daughter of your family, so even they have a lot of expectations from you. You have to manage their expectations also. You have a social life on Facebook, on Insta, on WhatsApp. आपको वहां भी रेगुलर स्टेटस डालना है ताकि साथ वालों को पता लगे कि हाँ जिंदा है, कर रहा है, ये बहुत कुछ कर रहा है, करते हैं लोग, हाँ, कि फीलिंग दिस एंड फीलिंग दैट विद हिम और हर, जो भी है, तो आप स्टेटस वहां डालोगे, आपको वो लाइफ भी मेंटेन करनी है. द सोशल लाइफ जो आप दूसरों को दिखाओगे वो भी मेंटेन करनी है. You have to you have to also manage your some financial troubles. If you are earning, if you are not earning, तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं आपको वो भी किसी तरह निपटाने हैं. And then there is your personal life also. आपको टाइम देना है किसी दूसरे को, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके सारा टाइम आपके प्रिपरेशन में जा रहा है, तो उनको टाइम कैसे दोगे, वो भी मैनेज करना है. सो इफ यू आर अ सिंगल पर्सन और आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है, देन कई बार क्या होता है कि आपका माइंड क्या होगा, आप कर तो लोगे. सपोज इफ यू आर वेरी गुड एट सम पीपल आर गुड एट मैनेजिंग द थिंग्स, आप कर लोगे, बट मेनी टाइम्स आपका माइंड हैंग हो जाएगा. योर प्रोसेसर इज गोइंग टू हैंग. दिस हैपेंस.
बट सपोज इफ आई गिव वन सिचुएशन, आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट ओनली. सो मेनी टाइम्स वो वाली सिचुएशन में आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है मुझे बाकी चिंता ही नहीं लेनी, दैट ही इज गोइंग टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, शी इज गोइंग टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, मुझे तो बस गेट के लिए पढ़ना. इन दैट केस आप काफी हैप्पी रहते हो, आप चिल रहते हो, ठीक है मुझे तो बस ये करना है, राइट. ऑफकोर्स इन रियल लाइफ आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी मैनेज, और देयर इज नो अदर ऑप्शन. आप अपने अंडर जूनियर हायर कर सकते हो तो कर लो. इफ यू कैन हायर सम जूनियर्स कि ठीक है ये काम कर देगा मेरा, ये वाला काम कर देगा, तू इसका जूनियर तू वैसे कर दे, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी ना. द सेम थिंग हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सपोज यू आर अ केमिकल इंजीनियर, आप कहते हो कि सर आई वांट टू सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री, सम डिटर्जेंट मेकिंग फैक्ट्री, और सम कोई आप स्पेशलिटी केमिकल बनाना चाहते हो, कुछ आप डाई बनाना चाहते हो, यू वांट टू मेक हैंड सैनिटाइजर. सपोज अभी सैनिटाइजर का चल रहा है, आपने कहा कि नहीं आई वांट टू मेक अ चीप सैनिटाइजर. व्हाट यू आर डूइंग, that you set up a small factory for making the sanitizer. Now you are calling the persons who supply the raw material, you are calling them कि भैया ये चाहिए, इतना इतना किलो इतना लीटर भेज दो. You are also managing those raw material supplies. Then when supply arrives, then you are taking decisions कि हाँ भाई कि कितना प्रोड्यूस करना है according to market survey. You are also doing the market survey. Okay, you are producing the things. Then you are also working to produce the sanitizers. आप मशीन पे भी काम कर रहे हो. Once sanitizers is produced, then you are also working in the sales department. आपको सेल्स भी देखने हैं, right? Then you are also taking the feedback. You are the only person who is managing raw material supplies, who is managing production, who is managing the market survey, who is managing the sales, and हो सकता है कि आप घर घर जाके बेच भी रहे हो कि मैडम मार्केट में एक नया सैनिटाइजर आया, ये ले लो. अगर आप ये सारा काम करोगे तो कितनी इफिशिएंसी के साथ कर पाओगे, सोचो. इफ यू आर डूइंग, वन पर्सन इज हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, जस्ट कंसिडर दिस सिचुएशन. इफ यू आर अलोन एंड यू आर मेकिंग these decisions, you are taking all the decisions, then ultimately your processor, your mind is going to hang, and ultimately जो performance निकल के आएगी वो satisfactory नहीं होगी. In the end of 1 month or in the end of 1 year, when you are going to analyze the performance, आप बोलोगे कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, सारे काम मेरे को करने पड़ते हैं. This happens in any organization also. Why you see in any organization there is HR department, there is accounts department, there is this department, there is that department, right? There is marketing department, HR, marketing, accounts, and I don't know. There are various departments. Why there is hierarchy? Because when things are planned according to a hierarchy, when there is a distribution of decision making, things work very well. Suppose now you started your factory of sanitizer. आपने सारे डिसीजन अगर आप ही ले रहे हो तो फिर सारे काम अगर आपको ही करने हैं तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आएगा वो नहीं होगा. Then what is the better way of doing this? That you become the director of your company. You sit on a chair, right? You hire juniors, you hire slaves, you hire workers. In real life slave नहीं बोलेंगे उनको. Here we are calling slave control. You are hiring people. Now you have hired someone to sell the things. You have hired someone to for managing for supervising the production. Supervisor आपने हायर किए हैं, he is going to supervise. अब suppose you are hiring a supervisor, and then if you have a supervisor, then you need not to go to each and every level कि तूने क्या किया, और आप बस कुर्सी पे बैठो. You sit on the chair and just give instruction to the supervisor. आपका और कोई जॉब नहीं है. आगे के बाद अब आपने सुपरवाइजर को बताया कि ओके वी हैव अ ह्यूज डिमांड, इन द नेक्स्ट 2 days वी हैव टू प्रोड्यूस दिस मच केजीज, दिस मच लीटर ऑफ सैनिटाइजर. दैट्स इट, दैट इज योर जॉब, दैट्स इट. उसके बाद की जो चीजें हैं दैट विल बी मैनेज्ड बाय द सुपरवाइजर. सो सुपरवाइजर बिकम्स TC2 एंड यू बिकम TC1. आपको कौन सेट पॉइंट देगा? इन रियल लाइफ यू गेट दिस सेट पॉइंट फ्रॉम द मार्केट सर्वे. ओके द डिमांड हैज इंक्रीज, आई हैव टू मेक दिस वन. और यू कैन गेट दिस सेट पॉइंट फ्रॉम योर कस्टमर्स, फ्रॉम योर क्लाइंट्स. Okay, sir, I want this much of deliveries of sanitizer immediately. It can be any hospital, can be a hotel, can be some industrial establishment. Okay, so you're going to give instruction to the supervisor. Supervisor is, there can be a third controller also. Supervisor is going to give instruction to the the workers that okay आपको आज शिफ्ट में इतना काम करना पड़ेगा, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो. So if things happens like this, if there is a distribution of decision making, then ultimately the final result is always good. सीधी सी बात है ना, अगर एक बंदे को सारी चीजें संभालनी है तो देखो कैसे पजल रहता है, और अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि कुछ कर ही नहीं पाए, सारी चीजें संभालने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाए. बट इफ देयर इज अ हायरार्की, आप बॉस हैं, आप कुर्सी में बैठिए मजे से और आप बस इंस्ट्रक्शन देते जाइए. आप फोन घुमाइए कि ठीक है आपने देयर इज अ अकाउंट्स डिपार्टमेंट आल्सो.
ठीक है। देयर इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो, आपने सीधा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फोन घुमाया कि हाँ भाई क्या सप्लाईज का क्या हुआ, रॉ मटेरियल सप्लाईज का क्या हुआ। देयर इज अ सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, सेल्स के लिए आपने 2 लड़के रखे हुए हैं, आपको सीधा उनको फोन करना है। सो दैट इज द मीनिंग, यू जस्ट टेक वन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. So earlier, this controller was deciding, see, this controller was deciding a lot of things. This controller was deciding ki, okay, first of all, what should be the jacket temperature to maintain this temperature at 70 degrees Celsius. Then this, I'm talking about conventional feedback control, diagram nahi abhi yahan pe. This controller was deciding that what should be the jacket temperature to maintain this liquid temperature at 70 degrees Celsius. Then it was deciding, second point, that what should be the, what should be the flow rate, what should be the oil flow rate to maintain this jacket temperature. Then it was deciding for maintaining this oil flow rate, what should be the valve opening. Then it was deciding for this much valve opening, what should be my output. 4 decision taken by this controller, right? But right now, what decision is taken by this controller? That what should be the jacket temperature. That's it. और jacket का temperature calculations करके then he'll give the set point. वो अपनी सारी जो मुसीबत है TC2 को देगा, देख भाई मैंने तो तुझे बता दिया, आगे का तू देख ले कि ओके फॉर मेंटेनिंग 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट दिस इन दिस लिक्विड, दिस जैकेट टेम्परेचर शुड बी 75 डिग्री सेल्सियस. मेरा काम हो गया, मैं तो चला. ठीक है, वो किसको बता दिया इसने? TC2 को. नाउ TC2 नोज, TC2 इज रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज सीनियर दैट आई हैव टू मेंटेन द जैकेट टेम्परेचर एट 75 डिग्री सेल्सियस. नाउ TC2 अगर उससे खुद हो रहा है तो कर देगा, नहीं तो वो अपने नीचे एक और कंट्रोलर को हायर कर लेगा. TC2 can say कि okay, I will give instruction to the junior controller that for maintaining this jacket temperature, what should be the flow rate. एक काम करो, एक और कंट्रोलर लगा लो. ठीक है, एक और कंट्रोलर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चले भाई. कंट्रोलर तो एक था तो भी चल ही रहा था ना. अगर एक कंट्रोलर था तो भी काम चल रहा था, 2 है तो बेहतर हो जाएगा. 1 से भले 2, 2 से भले 4, है ना. तो जितने ज्यादा आप अपने अंडर लोगों को हायर करते जाओगे, आपके काम की परफॉर्मेंस उतनी बेटर होती जाएगी. ऑब्वियसली अब अगर आप हायर करोगे तो उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी, नए नए कंट्रोलर लगाओगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा. ओके, देयर इज वन मोर कंट्रोलर कर लेते हैं यहीं पे. मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा तो फिर लेक्चर काफी लंबा चला जाएगा. TC3. ओके, सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दिस TC1, दिस इज कैस्केडिंग, है ना. सिंगल कंट्रोलर में TC1 वाज इन फीडबैक कंट्रोल, TC1 वाज टेकिंग ऑल द डिसीजंस. Okay, here TC1 क्या कर रहा है? देखो, TC1 is only making, TC1 is sitting in the chair, he is the boss, he is making only one decision, that for maintaining, suppose T out SS is equal to 70 degrees Celsius, for maintaining 70 degrees Celsius temperature, what should be the jacket temperature? That's it. Okay, TC1 is, with respect to this diagram I'm writing here, that TC1 takes a decision. आपको इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए. In cascading, distribution of decision making, let's write here distribution of decision making. What is the meaning when I say distribution of decision making? That TC1 only takes one decision, that what should be jacket temperature. That is the decision taken by TC1. What should be jacket temperature to maintain the liquid temperature at 70 degrees Celsius. Now, TC2 is going to take receive the instruction that okay, I have to maintain 70 degrees Celsius jacket temperature. But TC2 को इंस्ट्रक्शन तो मिल गया भाई. ऑब्वियसली देखो, आपको उसने बताया कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है. सपोज यू आर दी जूनियर एंड यू आर वर्किंग अंडर योर बॉस सेड कि यू हैव टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ सैनिटाइजर. दैट इज योर सेट पॉइंट. बट व्हाट इज द करंट प्रोडक्शन, ये तो पता करोगे ना, कि सीधा जाके बोलने लग जाओगे. इफ यू हैव टू टेक डिसीजन दैट हाउ आई कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सैनिटाइजर, देन ऑब्वियसली यू हैव द इंस्ट्रक्शन. बट आपको सपोज मैंने कह दिया कि तुझे 800 किलो सैनिटाइजर बनाने हैं, तो आप जाके देखोगे तो सही कि यार अभी कितना बन रहा है, व्हाट इज द करंट प्रोडक्शन रेट, एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू, एंड देन ओनली यू विल मेक द डिसीजन, यू विल मेक प्लानिंग. क्योंकि एक काम करते हैं कि भाई यहां से लेबर बढ़ाते हैं या लेबर घटाते हैं, एंड वट एवर डिस्ट्रीब्यूशन यू वांट टू डू, देन यू आर गोइंग टू मेक प्लान्स. सो this TC2 receives instruction from the TC1 that I have to maintain this much of jacket temperature, but then TC2 should also measure that what is the jacket temperature. That is why there is one more measurement. That is why एक और measurement हुआ कि TC2 पर measure तो करेगा नहीं कि भाई अभी क्या चल रहा है. अगर आपको मैंने कह दिया कि काम कर, इसको बढ़ा दो, आप सीधा वहीं पर डिसीजन लेने चले जाओगे? नहीं.
भाई पहले आप देखोगे कि अभी जो चल रहा है whatever is happening वो क्या है, and then what is the difference, then you are going to make plans. ठीक है, गवर्नमेंट इज मेकिंग सम प्लान. देखो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कुछ प्लान बनाने हैं तो ऐसे नहीं कि बैठ के प्लान बनाना शुरू कर दिया, पहले जाके देखना पड़ेगा, है ना. एंड दैट इज वाई डेटा कलेक्शन, आप जो बहुत सारे तरह के डेटा आपसे गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं कि राइट नाउ व्हाट इज द थिंग्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेटा देन डिसीजंस आर मेड, राइट. सो अगर आप ये डेटा कलेक्शन नहीं करते हो देन दिस TC2 won't take decision. So there has to be one more measurement about this jacket temperature if TC2 wants to control the jacket temperature. Now TC2, what should be the jacket? TC2 receives set point from TC1, TC1 and decides that what should be the flow rate, what should be oil flow rate. Are you getting this? So what is the decision made by TC2 that what should be the flow rate, and then this instruction will be given to TC3. Now TC3 gets the instruction, TC3 receives set point from TC2. So TC3 receives set point from TC2 that what should be the flow rate. But if TC3 receives the set point from TC2 that what should be the flow rate, then what do you think? It should measure the actual flow rate. उसके बिना कैसे decision लेगा? So now the TC3 is going to measure that what is the actual flow rate, right? It is going to measure the actual flow rate and then it is going to correct the flow rate. So TC3 will also take one more measurement. मैंने इसलिए यहाँ पे सारे measurement बना दिए. One more measurement. Because TC3 gets the set point of the flow rate. मुझे flow rate कितना रखना है, but अगर flow rate इतना रखना है तो अभी है कितना? Then TC3 is going to take decision, receive set point from TC2 and decides what should be. Okay, this should not be TC. ये तो flow measure कर रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? This is FC. I'm sorry, please correct this. Flow controller. It receives the set point from TC2 that this much should be the flow, right? Then it measures the flow and decides what should be the flow rate, right? This is called distribution of decision making. Earlier, ये सारे decision, एक और डिसीजन था दैट व्हाट शुड बी कंट्रोलर आउटपुट. तो एक काम करते हैं, लास्ट के दो काम सबसे जूनियर वाले से. ऐसा होता है ना, आप कई बार सबसे जूनियर पे कुछ ज्यादा ही लोड दे देते हो. दिस FC इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट शुड बी द फ्लो रेट एंड फॉर दैट फ्लो रेट व्हाट शुड बी द कंट्रोलर आउटपुट. एंड दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज अचीव्ड इन कैस्केड कंट्रोल. आपको मेरे ख्याल से समझ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ ऑल दिस वन इज प्राइमरी, स्लेव. ठीक है, तो दिस व्हाट आर द डिसीजंस टेकन बाय वेरियस कंट्रोलर्स. प्लीज राइट हियर FC. What are the decisions taken by various controller? Now you can easily find that FC is going to take what decisions. And हर एक कंट्रोलर को एक तो सेट पॉइंट चाहिए और एक मेजरमेंट चाहिए. So here also see the primary controller, one set point provided by the user, one measurement, right? Secondary controller TC2, set point is given by TC1, then measuring the jacket temperature. FC, set point is given by TC2 and measuring the flow rate. करेक्ट. सो हर एक कंट्रोलर को एक सेट पॉइंट चाहिए होता है, एक मेजरमेंट चाहिए होता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. व्हेनेवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज देयर, द रिजल्ट इज ऑलवेज परफेक्ट. नाउ अगर आप बोलोगे सर ठीक है, इन कैस्केडिंग नाउ व्हाट विल बी द इंपैक्ट? द इंपैक्ट विल बी दैट देयर विल बी a better means there will be more satisfactory control, fast control, sluggishness will be. देखो सीधी सी बात है, जैसे यहां पे चेंज हुआ, आप देखो सपोज for keeping this temperature at 70 degrees Celsius, what should be the jacket temperature? Jacket temperature should be 75 degrees Celsius. For 75 degrees Celsius, what should be the flow? Flow should be 8 meter cube per hour. Now the moment this flow will change, this control will take action. It will adjust वहीं पे adjust कर देगा, राइट. द मोमेंट दिस फ्लो विल चेंज, दिस कंट्रोलर विल मेजर कि अच्छा मुझे तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है 8 मीटर क्यूब पर आवर, आई हैव टू मेंटेन द फ्लो रेट, बट दिस इज 8.2. ओके, सो आई हैव टू डू समथिंग, देन इट विल एडजस्ट द थिंग्स, राइट. वो यहां तक पहुंचने ही नहीं देगा, या पहुंचेगा तो बहुत जल्दी उसका असर वो यहीं पे कंट्रोल कर देगा. समझ रहे हो आप भाई? सीधी बात है, बॉस तक आपने चीजें पहुंचने नहीं दी. जूनियर ने क्या किया, ट्रेनी ने अंदर ही अंदर बाहर संभाल ली. बॉस तक चीजें पहुंची नहीं, बॉस को तो कुछ पता ही नहीं, बॉस चिल बैठा है कि कुछ हुआ ही नहीं.
ठीक है, वहां ब्लंडर होते होते बच गया, नीचे वाले बंदों ने संभाल लिया, देन ऑफ कोर्स थिंग्स आर गुड इन दैट केस. दिस इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग. Right. Now, one more thing, one more observation I'm going to write here for cascading. See, obviously, see, you have hired some persons. You have hired some persons. Okay, one more thing. That was 0.6, now 0.7. This was about the hierarchy and the distribution of decision making. 0.7, that we can always identify. We can always identify the primary control variable. What is the meaning of we can always identify the controlled variable? There is no meaning of primary controlled variable. Controlled variable is only one. We can easily identify the controlled variable by checking the input of primary controller, right? Primary controller. See, the controller to which set point is provided by the user, ये लिखा है हमने कहीं ना, master controller. The controller to which set point is given by the operator is called master controller. Correct? Now to the master controller, which set point is given? T out SS. मैं किसका set point दे रहा हूँ? T out का set point दे रहा हूँ. Means T out is the control variable. Now you can see that here the set point is of jacket temperature. I am measuring jacket temperature. Here is the set point of the flow rate. I am measuring flow rate. So is flow rate is the control variable? No. Jacket temperature control variable? No. See the TC1. TC1 को जो मैं set point दे रहा हूँ, this set point is for T out, means T out should be the control variable. So that's what I am writing here. We can always identify the control variable by checking the input of primary controller. One more point now. This was 7th, 8th. Now let us talk about the real life situation. I was talking about, suppose you have set up a small unit of manufacturing sanitizer, and earlier you were doing everything alone and you were not able to manage the things. The result was not satisfactory, so you hired juniors और आपने juniors को काम बांट दिया. Obviously अब आप क्या चाहोगे? What do you want? You should work, I mean your juniors should work faster than you, or you should work faster than your juniors. क्या लगता है? Boss जो होता है, boss is always like he's sitting in the cabin making the decision, giving instruction to the junior. The junior is giving instruction to the further junior staff and then to the further junior staff. The person who is actually doing the job in the field, that should be the fastest person, right? Then only things work. And it is logical ना, suppose you have hired someone और आप ही उससे ज्यादा फास्ट काम कर ले रहे हो, तो उसको रखने का क्या फायदा, right? If you have hired someone, if you are working in a hierarchy, अगर आप खुद ही उससे ज्यादा बेटर काम कर सकते हो तो उसको रखने का कोई फायदा है क्या? नो, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी. आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी रखने के लिए. इफ यू हायर्ड अ जूनियर, अ स्लेव, अ सेकेंडरी कंट्रोलर under your supervision, then of course he should work faster than you. Then only there is a meaning of hiring him or her. Otherwise there is no meaning of hiring. आपने किसी को हायर किया तो वो तो आपसे तेज परफॉर्मेंस करना चाहिए ना, वरना फायदा क्या होगा? आप बस इंस्ट्रक्शंस देते जाओ, वो फटाफट उनको निपटाता जाए. दिस इज अ बेसिक लॉजिक, दिस इज अ डेली लाइफ. जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां से समझो. अब वहां से कैस्केडिंग. So for cascading to be advantageous, for cascading to be economical, for cascading to be fruitful, the controller which is at the lowest level should be the fastest controller, and the controller which is at the topmost level, who is the boss, should be the slowest controller. मतलब सीधी बात है, ये slowest हो जाए ना हो, लेकिन ये सारे इससे फास्ट होने चाहिए, तो ये अपने आप स्लो हो गया, राइट? Automatically it is, if other persons are fast, then I am automatically slow, right? So for cascading to be economical, now why I am not using any process control concept to explain this? Because in that case I'll have to take some values, I'll have to solve it, then only I can. So I'm using a daily life, very simple example. If we have hired someone and you can already do the things fast than him, better than him, then there is no meaning of hiring. There is a totally waste of money. So cascading is economical. Economical मतलब आपने जो पैसा लगाया उससे कुछ फायदा हो रहा है. When cascading is economical, when the secondary loop कह लो,
or secondary controller is faster than primary controller, then only cascading is economical. कितना फास्ट होना चाहिए? I can't say, but many books write the thumb rule that at least 3 times faster. ये कोई नहीं पूछेगा, don't worry. The secondary controller should be at least 3 times faster than the primary controller. Then only there is a meaning of applying extra cost for hiring someone. आपने किसी को हायर किया, उससे काम नहीं निकल रहा तो उसको रखोगे क्या? नहीं, very simple. And that person should be fast than you. You are just giving instruction, ये कर दो, उसने करके दे दिया. आपने इंस्ट्रक्शन दिया, ये करो, उसने करके दिया. अब आपने किया कि ये कर दो, उसने 3 दिन लगा दिया, आप सोचते यार इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता. So obviously आपने जिसको हायर किया वो आपसे फास्ट होना चाहिए. The person who is in the lower position in the hierarchy should work fast. आप देखते हो ना, जब बंदा रिक्रूट फ्रेश जाता है, ट्रेनिंग जाता है, उससे न जाने कितना काम कराते हैं, और जैसे जैसे वो हायरार्की में ऊपर पड़ता जाता है, क्या फील किया ये चीज? एज द पर्सन मूव्स इन अपर पोजीशंस इन हायरार्की, उसका काम क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है. वो धीरे धीरे अपना काम कम कर देता जाता है ना. वो नीचे टेंशन बांटता जाता है अपनी सारे. दिस इज कैस्केडिंग. So cascading is very much similar, and in real life everywhere there is cascading. आप अपने घर में भी देखोगे there is cascading, right? आपके कुछ फंक्शन होने वाले हैं, कुछ सपोज there is some kind of function going on, or you are planning for some function, can be birthday party, can be marriage party, can be any function, can be some kind of festival. then अगर आप उसकी तैयारी करते हो, then your parents give instruction to, है ना, cascading होती है. आपको बोला कि भाई ये सामान ला दे, आप दौड़ के ले आए. ये कर दे, आप यहाँ ऑर्डर दे आओ, पनीर ला दे, ये ला दे, बना दूंगा. आप धड़ाधड़ ले आ रहे हो, सब कुछ ठीक ठीक चलता है. आपको बोला है, आप भूल गए, आप मस्त बाइक लेके घूमने चले गए, शाम को वापस आ रहे हो, कह रहे मैं तो भूल गया. तो इसमें क्या होगा? आपको काम देने का कोई फायदा हुआ नहीं. अब यहाँ पैसे नहीं लग रहे, अलग बात है, बट देयर वाज नो मीनिंग ऑफ गिविंग, देयर वाज नो मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इससे बढ़िया आपके पापा, आपकी मॉम सोचेंगे यार ये तो मैं ही जाके ला देती, है ना. That the same thing is happening with the controller. So the secondary controller cascading is economical when the secondary controller is faster than the primary controller. Now in this there are some sub points also. It means suppose if there are only 2 controllers, then it's okay, but if there are more than 2 controllers, 5 controllers, like that, this one, the controller closest to the final control element, FCE, the valve, is slowest or fastest? Fastest. Because the controller which is closest to the final control element is lowest in the hierarchy position, and therefore he should, or she should work fast. है ना. बिल्कुल ये नया कंट्रोलर, अभी इसको रिक्रूट किया, ये काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? फिर तो इसको काम करना पड़ जाएगा. सो ऑब्वियसली सबके सब उसी को पीछे लग जाते हैं कि तू ही काम कर सारे का सारे. सो ही और शी इज द फास्टेस्ट कंट्रोलर. The flow controller, the junior most person is the fastest person, and he is actually doing the work. They are doing mental work. बैठे हुए ऑफिस में, ठीक है. So and the speed of the controller increases. Speed of controller. If I have to make an arrangement, then speed of controller is FC is fastest, then TC2, then TC1. Primary controller should be the slowest controller. The controller which is far away from this final control element is the slowest controller, or the controller to which set point is provided by the user is the slowest controller. बात समझ आई? That is the meaning of cascading is economical. Okay, I can also say that if this controller is fast, I can say that the gain, there's one more gain, KC, the gain of secondary controller should be more than the gain of primary controller for cascading to be economical. Secondary controller should be more than the, this is point number 8, more than the gain of primary controller. One more conclusion, gain of primary controller. बात समझ आ रही है? This is how cascading works. Primary controller, ठीक है. नोट कर लो. Okay, this is the 8th point. One more point, while tuning. Now when you are designing a cascade control, you do the tuning, है ना. So while tuning, the inner loop should be tuned first, and thereafter according to the dynamics of inner loop, the outer loop, means the primary loop should be tuned. तो ये पॉइंट एक लिख लो. आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगा? तो कुछ चीजें याद भी रखनी है आपको, हर चीज बतानी नहीं है. ये लिख लो. While tuning a cascade control loop, while tuning I told you na, because these things we are doing
नॉट इन वेरी मच डिटेल, मतलब आप इसमें, क्योंकि कैस्केड कंट्रोल में और भी बहुत सारी चीज होती हैं और भी एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम सारे कंट्रोल नहीं पढ़ रहे हैं, हम डेड टाइम कंपनसेटर नहीं पढ़ रहे हैं, फीडबैक फीड फॉरवर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, ऑक्शनियरिंग कंट्रोल नहीं पढ़ रहे हैं, इन्फरेंशियल कंट्रोल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बस एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं थ्योरी, बट कैस्केड में फिर भी आपको काफी डिटेल बताइए, एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल ट्यूनिंग अ कैस्केड कंट्रोल लूप. While tuning a cascade control loop, inner loop should be tuned first. Inner loop should be tuned first, and then the outer loop should be tuned first, and then the outer loop. समझ गए? Then the outer loop. ठीक है, पहले इनर लूप की ट्यूनिंग होगी, पहले इनर लूप का केसी डिसाइड होगा, एंड देन द आउटर लूप केसी विल बी डिसाइड. सर ये कैसे हुआ? कुछ चीजें याद रखनी है. दिस वाज द 9th पॉइंट. One more thing I was okay, this is the 9th point. Now I told you that I'll take one more example of cascading. So let me show you that because this example is taken by in most of the books by most of persons, teachers, faculties. So I'm taking one more example. That is the control of temperature in bottom trace of a distillation column. There also we can apply cascade. Cascade एक heat exchanger में लग जाएगा, reactor में लग जाएगा, जहां लगाने लगा, right? So one more example, that is the 10th example, that is the control of distillation column. Right, write down. Cascade control strategy. Cascade control can also be employed. Can also be employed for controlling. I'll just show you how to make the diagram. क्योंकि discussion तो वैसी ही है ना? And then I'll tell you that why cascade control should be required in this case also. Right. So, okay, let me show this. Yeah. Cascade control can be employed for controlling the bottom trace temperature. Bottom trace temperature in a distillation column. See how? I'm not saying that this is the only two possible examples. There are various examples in distillation. Note down, distillation column. Suppose we have this bottom section of distillation column. This is the bottom section of the column. Okay. There are various trays. What I want to control, I want to control the temperature of a particular tray, bottom tray. Suppose what I'm going to do, that first of all, suppose I want to control this temperature. So I'm going to take the measurement of the temperature. Don't ask कि सर असली में ऐसा ही होता है क्या? There can be various ways of controlling the distillation column temperature, but theoretically this is the only possible way we are going to discuss. Right? This temperature will be sent to the controller TC, to which set point will be provided. Right? Now how this controller is going to change this, you know, that we have a stream here going to the reboiler. This is the reboiler. Okay. Now this reboiler sends all the vapors to this bottom trace, right? And this reboiler is heated with the help of a steam. Correct? In this reboiler, we have steam here. Steam is coming from somewhere. Steam is always used from some steam header. I mean, steam is coming from some other process, some other header. Okay. And steam header is used to provide steam to various processes. Okay. This is the steam which is coming, and then it is used to heat, and then the steam is leaving. Condensate, you can say. Not necessarily condensate. The steam can also, we can have, generally steam को जब भी आप use करते हो उसके latent heat का use कर सो. That is why I'm writing condensate. So steam is coming from the steam header. Okay, this is steam in. Now what can be the problem here? You are controlling this steam flow from here. This is conventional feedback control in a distillation column. This is conventional feedback. Correct? Now if I ask you कि कैसे करेंगे यहाँ पे conventional feedback. Now what can be the problem here? Here also see. Earlier the manipulated variable was the hot oil flow rate, and there can be a situation that if the temperature of hot oil will change, then the response of the loop
The response of the feedback control may not be satisfactory. Here also, steam is coming from some steam header, right? Steam header matlab ek, aap suppose there is a storage of steam, and that storage supplies steam to different equipments in the process. But suppose suddenly the demand of steam increases by some other process, due to which the pressure of this steam decreases. देखो ये valve इसका pressure control कर सकती है क्या? नहीं, only flow rate. Suppose what is going to happen that if there is a change in the steam pressure, right? So अगर pressure change होगा तो क्या होगा? The flow rate is going to decrease, right? Suppose there is a decrease in steam pressure. Now this valve is not controlling the steam pressure. Steam pressure का change depend करता है back end process आपका क्या चल रहा है. The steam is coming from the steam header, and steam header is also supplying steam to the various process. So suppose if there is a decrease in the steam pressure, due to which the flow rate will decrease, due to which the pressure decrease होगा तो flow rate decrease होगा ना वेपर का. I think देख लेना fluid mechanics के basic concepts, if decrease in pressure leads to decrease in flow rate or not. Okay, so due to which steam flow rate decreases, right, leads to less vaporization in the reboiler, right? And then your temperature, which leads to or which causes decrease in temperature. Then the controller knows that okay, temperature has decreased. चीजें तो पहले बिगड़ गई थी, but now the controller knows okay, the temperature has decreased, so it will take action and think. But again, the same thing, that this entire response will take time. The response will become sluggish, and there are various components. सभी component का कुछ ना कुछ dead time is always there in reality. So सभी components का कुछ ना कुछ dead time होगा. If there is some dead time, large dead time, then this entire process is going to take time. Again, cascading can be useful here. Okay, so if cascading can be useful, then how to make the cascade control strategy, cascade control loop? देखो, right, these are the trays. So I'll take the same measurement as I was doing before. This is going to the reboiler. Okay, the steam is coming from here. I hope this is visible to you. I'm not writing all the things now. The steam is coming from the steam header. The steam is coming here, right? Now what I'm going to measure, I will install one more controller. I will recruit one more controller. This is the temperature measurement taking place as before, goes to the temperature controller, and then to the temperature controller, set point is provided. This temperature controller has hired one more controller, that is the जो क्या measure करेगा, steam का pressure. Suppose if pressure has decreased, due to which the flow has decreased, तो pressure measure करने की जरूरत नहीं है. This is the flow controller only, right? Now this flow controller is going to measure the flow rate, right? So this flow controller FC is going to measure the flow rate of the steam, and then it will correct the steam change. Pressure को correct नहीं करेगा तो flow, देखो pressure की वजह से flow rate बदला है तो flow rate को correct करेगा, right? So क्योंकि pressure को तो ये increase नहीं कर सकता, increasing the pressure is not in its control, वो तो कहीं और से आ रहा है. So it should also take the measurement of the steam. So suppose the measurement is coming from here, right? So it is taking the measurement of the flow. And right, in this case also the instruction to the flow controller is given by the temperature controller. So if you ask me, sir, in this case which one is primary controller? TC is the primary controller, set point is the temperature is the set point, flow controller is the slave controller. This is the manipulated variable, and you can again see there are more than one measurements. Okay, so I was trying to control the temperature in this case. Okay, so you can see here that in case it's not necessary कि cascade control होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है.
Even if you are satisfied with the current performance, that's fine. Otherwise, you have to go for cascade control. And cascade control, ultimately what it does, it improves the sluggishness in response. Right down. So cascade control, what was the 9th point? While tuning a cascade control loop, inner loop should be tuned first. Okay. Right. Ajay, you have also, can you see that I have taken 2 examples. In both the cases, there was a disturbance associated with the manipulated variable. In earlier also, what was the manipulated variable? The oil flow rate. But I told that if suppose the oil temperature increases or decreases, then there will be problem, and the entire response will take time, and we should have cascade. Here also, manipulated variable is the steam flow rate if pressure of the steam changes. So cascade is generally useful when there is a disturbance associated with the manipulated variable, right? That is, in that case, cascade should be applied. मैंने आपको बस पूछा ना when cascade should be applied, how cascade should be applied, right? And what cascading does actually. पता भी होना चाहिए. आप बोलोगे कि नहीं सर, आपको पता होना चाहिए कैस्केड करने से होगा क्या. Cascading, provided that you have, I mean, the requirements that secondary controller is faster, then only this will happen. Cascading improves the overall response. बस improve कर रहा है. तो आप बोलो सर improvement जरूरी है क्या? जरूरी है कि नहीं है, that totally depends upon you. Cascading improves the overall response. Right. So you can say, what is the meaning of improvement? There can be various meaning. Sluggishness को decrease कर सकता है. It can also increase the stability. You can say it can also increase the stability of cascade after doing cascading increases a lot. So that is the effect of cascading. Ultimately, what you get after doing cascading, right? Now this was the all about cascading. इतना अगर आपको पता है तो आप चीजें समझ लोगे. Now the only thing is you should be able to represent the cascade control strategy in a block diagram.